And I get back to where we ended up last time. So we started turbines, yeah. The two types, the steam turbines or gas turbines, because steam is just one type of gas, and hydro power or hydro turbines. So you know that, okay, one relies mainly on um, pressure. The hydraulic turbine relies mainly on pressure, and the gas turbine relies on pressure as well as temperature. Yeah. So enthalpy is the right word to say. So, so heat transfer calculation in turbines. So this example 4.4 can be seen as one application. So I'll again only touch on the important points. I would like you to actually read all the steps. So the main thing is that if I read the question, um, steam enters turbine operating at steady state. So you see this in most of these examples, steady state is the assumption. With a mass flow rate that is given, the turbine develops a power output of 1000 kilowatt because it's a turbine, so it has to develop power output. At the inlet pressure is 60 bar, okay. And in this diagram you can see, yeah, the at the inlet you have this um, these values are given for different quantities, so including pressure. Temperature is also given, velocity is also given, and at the exit pressure, yeah, velocity, and this time quality is given. Yeah. Quality is 0.9 or 90%. Now note this thing, at the inlet, um, you have um, yeah, it's something very close to steam, yeah. So steam will enter because this is a steam turbine, so you would like to have steam at the inlet, and even if it changes, it will change very little from steam. So even if it's vapor, it will be saturated vapor, high quality. What's the problem? Okay, yeah, but I have added you as a guest, and I can't do anything other than that. Okay, so I don't know if I can invite this person. Uh, uh, okay, so let's resume. So do you see that the quality is reduced, yeah, of the steam? Yeah. So as it at the exit, it doesn't remain pure steam. It is actually a mixture, vapor liquid mixture, and 90%. So it's still actually mostly vapor, but that's something you need to know. Calculate the rate of heat transfer between turbine and surroundings. Yeah. So so Q is the unknown here. Yeah. CV for control volume. So in this case, definitely you will apply energy balance, first law of thermodynamics, energy balance, including mass transfer. That's straightforward. Um, the only thing which I want to discuss here is this diagram. Yeah. You must draw this conceptual diagram before you proceed with this example, because you know that in state one corresponds to the inlet, and state two corresponds to the exit. Yeah. Now you see that in state one is outside of this pressure dome. Yeah?
So vapor dome, which means that it is there is no concept of quality here. Yeah, it's just steam. The concept of quality is only when you enter this um, vapor dome. So at the exit, um, because energy is taken out of the steam, so you can expect that it will enter the vapor dome. So it will have a low, it will lose that steam character. It will become mixture, yeah, in equilibrium with liquid. So this means that you can now use appropriate table in this, yeah. And here, just remember that in this region, the temperature and the pressure are independent. So T1, P1. That's why at the end, let you see both P1 and T1 are given. There is something you need to notice. Yeah? And at the outlet, only pressure is given because temperature is dependent on that. So I mean, the rest is just obvious. You see, this if you notice this thing down, yeah, you remember when to use this equation. You use this inside the vapor dome, yeah, and the rest is obvious. What and instead of focusing on the calculations, I would like you to notice the values. Yeah, the values are important because the values they confirm something which we just said last time about steam turbines. So what did I tell you last time about steam turbines? Maybe if I go back to that picture, yeah, and this steam, let's say this is your steam turbine, and this is steam. So I told you, and you also agreed, that mainly the enthalpy is what we are uh, utilizing. Yeah, we rely very little on kinetic energy. Yeah, so it's not a wind turbine. And so let's now see, and the heat transfer rate to the surrounding. Yeah, to the surrounding is also negligible. Because most of the activities, the conversion here, conversion, yeah, from one form to the other is the major factor here. So let's see how those values compare. So if I now, um, if you look at this value, the the power output, notice this thing down, maybe you just write it down somewhere. 1000 kilowatt. Now 1000 kilowatt, um, whether you see this as a, I mean, large value or small value, of course, you know that 1000 kilowatt is a large value compared to other sources of power. But look at other quantities. For example, the change in kinetic energy. This is the change in kinetic energy per unit mass, yeah, because mass is not there. That value is per kilogram. How much? 0.4 kilojoules. This is very small compared to the power you produce, that is 1000 kilowatt. Yeah. Similarly, the heat transfer, yeah, is also, I mean, of course, it is minus 62 kilowatt, but minus 62, the magnitude is much smaller compared to 1000. So again, see, these are negligible. That's what we said last time. And why do we have a minus sign? Yeah. Why do we have a minus sign? Because this heat is this transfer is to the surrounding. Yeah, you steam. That's what you can expect in a steam turbine. You rely on high temperature, so the surrounding will always have a lower temperature. So you can expect this minus sign. If you don't get this minus sign, then you must have done some mistake in the calculations. So the next topic is compressors and pumps. So if you remember in the previous chapter, or maybe the chapter before, we had two types of cycles. Now it's not related to this, but it's just a reminder that we had refrigeration, and what was the other one?
One was refrigeration, and the other was it was the power. No, not power cycle. Sorry, refrigeration and heat pump. Yeah, RMO heat pump. Heat pump. So those were two types. So here we also can see two types. Um, the compressors and pumps. So they both do one thing. They both take energy in the form of work from the surrounding. So you have to, and you can see, I mean, you must have heard this word pump. Yeah, that's what a pump does. You need some power source like a motor or anything, and then you use that external power to change something in the control volume, and that something is actually pressure. So you increase the pressure. That's what a pump does. So if you need to pump water, water flow requires pressure, and with the existing pressure, if the pressure of water is the same as the atmosphere, water will never flow. So unless it's, of course, I mean, if it's gravitational, then it's higher. But if you have water which is at the ground level, no gravitational energy, so with the pressure equal to atmospheric pressure, nothing will happen. If you want to increase the pressure, pressure is a form of energy. Of course, pressure is not energy, but pressure will give you energy. Flow work. Yeah, remember last time, flow work. So that energy has to come from outside, and that's why you need some electrical input or any other, or hand pump. You must have used hand pump. Yeah, and hand pump you use your mechanical work to produce that change of pressure. Now you use the word pump when the substance involved is liquid, yeah, like water or nitrogen or anything. But if you use the same the same process to input work and you change pressure, and if that is a gas, then you call it compressor. Because liquids are incompressible, so you can change their pressure without changing their volume, without compressing them. But if you are doing the same with a gas is compressible. So while increasing the pressure, definitely it will compress. Yeah, so that's why you have compressors and pumps. They share one thing. So these are different types on the left hand side. This is the okay. Before I get to these types, if I ask you, don't look at these pictures. Just ask a simple question. You want to provide external work, yeah? Definitely, you need work from the surrounding to this system, which we call either a compressor or a pump, and a this will produce actually a higher pressure. Now, can you imagine in what form you provide the work? What I mean, different. I already gave you the example of hand pump. Hand pump. So if you want mechanical work, yeah, mechanical work, mechanical work will either be in the form of force moving this way and this way, yeah. So that's what this type is doing, reciprocating pumps and compressors. What they do is that you have some power source here, a motor or a hand or anything, and this piston makes sure that this can go to and fro, right and left. So you have a cycle, yeah, inlet fluid enters, whether it's liquid or gas, and this stroke to the left will compress it. If it's a gas or if it's a liquid, it will just change the pressure without compressing it. And then you need to complete the cycle, so it has to come back. So that's why you use the term reciprocating. Yeah. Is there any problem? सर, Yes. ये जो डायग्राम बनी है पार्ट ए में, ये तो एक इंजन का सिलेंडर की डायग्राम नहीं है? नहीं, इंजन का ये इसका स्ट्रक्चर उस टाइप का है, लेकिन ये साइकिल उल्टा है ना। अच्छा, उसमें 4 वो स्ट्रोक्स इंजन होते हैं सर, वो पावर प्रोड्यूस करता है ना, ये पावर कंज्यूम करता है। अच्छा।
ठीक है ना। तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आ गए ना। आप अभी पिछले में फंसे हुए हैं ना अभी। वो तो अगर ये तो इंजन इंजन में तो ये होगा कि यू विल हैव हाई प्रेशर अवेलेबल और हाई टेम्परेचर, and that will be doing this thing, and then you will get power out of it. ओके सर। Pumps and compressors इसलिए मैंने स्टार्ट में एग्जांपल क्या दिया था, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन का। ये एग्जांपल इसलिए दिया था कि वहां पे भी वर्क यूज होता है ना। So remember that ओके compressors सर। and pumps, they will need work, and one simple form of work you can perform. um, अच्छा, ये सिलेबस आप सबको पता है। सेशनल 1 के बाद जो मैंने पढ़ाया है वो सेशनल 2 में आएगा, ठीक है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। अब मैं आपको टॉपिक्स बता दिया, कोई ट्यूशन सेंटर मैंने नहीं खोला हुआ कि मैं आपको टॉपिक्स बताऊं कि ये वाला आना है और ये करना है और ये करना है, अभी आप बाहर आओ इनसे, ठीक है। एनीथिंग आई कवर्ड आफ्टर सेशनल 2 इज ऑटोमेटिकली, बल्कि इवन ये भी मैं बता दूं, ये भी मैंने कंप्लीट नहीं बताया, क्योंकि सेशनल 1 में कुछ चीजें मैंने कवर नहीं की थी, बिकॉज वो लास्ट मिनट में जब पढ़ाते हैं कोई चीज। So anything that was not covered in sessional 1 automatically is included in session. That's it. So कोई selective study का concept कम से कम मेरे कोर्स में आप ना imagine ना करें कि मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि आप ये कर ले। That's not good. You have to understand this course. So let's get back. Okay. So the simplest mechanism of work transfer from the surrounding to a compressor or a pump is this to and fro, yeah? Linear motion. So left, right, up, down, whatever. Now, the other more complicated than that is this diagram in B, that's called axial flow. So you see, you don't rely on some external, so, so, so this inlet, through this inlet, the liquid or gas will just go like that. So there is no to and fro motion. But inside the pump or compressor, you have these rotors, yeah, these rotors. And you see this change of cross section. Yeah? So imagine if these rotors are moving, yeah, they are rotating, and the liquid or gas is in a casing which is stator, that is not moving. So you have relative motion, and that relative motion gives you this pedaling effect. It's like a pedal. Yeah? So that will do the same thing. Yeah, it will increase the pressure. At the outlet, you will have a higher pressure. Now, do not confuse this with the nozzle thing. You remember last time we discussed nozzle. Yeah? Nozzle was like that. Yeah, the cross section at the input was smaller, the cross section at the output was larger, and we said that the pressure increased. There, there was nothing, there was no power source involved. Yeah, it was just flow. Yeah, in this case, you have power sources involved. So if you have power sources, that will the increase of pressure is because of the power force. ये मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आ रही है आपको आवाज? हेलो। यस सर। अच्छा, ये मुझे लगता है कि मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ था। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी वो आवाज काफी रुक रुक के आ रही है, अच्छा अच्छा मसला आ रहा है। अच्छा, नहीं ये मेरे ख्याल में मैं इसको क्लोज करता हूँ, अब ठीक हो जाएगा। अब बेहतर है। अब बेहतर है। हाँ, तो अच्छा, और स्क्रीन शेयर्ड है ना अभी भी? हाँ, स्क्रीन शेयर्ड है, ठीक। ओके। सो डू यू नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप मुझे बताएं कि ये चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन उल्टा क्यों है नोजल से इस केस में, ये बताएं जरा।
असल में ये सीरीज में है ना, यू कैन थिंक ऑफ इट एज, जिस तरह आप चीज वोल्टेज सोर्सेज को सीरीज में लगाते हैं ना, किस किसकी तो ये बात जो, कर रहे हैं? यस, हेलो, तो अब आपको, अगर आप ये देख लें कि जो फर्स्ट रोटर है ये वाला, this है, this is exposed to maximum fluid, yeah. So when this is done, the next one will deal with the remaining fluid. तो जो जिस फ्लूइड को इसने डील नहीं किया उसका प्रेशर ये इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो because most of the chunk will be done by the first one, so later on you can change, so you can save power by using a smaller actually rotor, yeah. सर वो आवाज आपकी बहुत कट रही है। अच्छा, ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अभी अगर मैं नेटवर्क चेंज करूँ तो ये फिर नहीं हो पाएगा। नहीं, अभी तो मुझे वो क्वालिटी वाला सिग्नल नहीं आ रहा, वो क्वालिटी जो लो थी ना, वो यहाँ पे इंडिकेटर गायब हो गया, इसको तो इसके बाद ठीक होना चाहिए। ये क्या है, अच्छा ठीक है, so let's get back to this, and these are the other types, yeah, the centrifugal pump, you must have seen this in old होम्स। आई डोंट नो कि आजकल सेंट्रीफ्यूगल पंप आपने देखा है घर पे, आप कौन सा पंप होता है घर पे अगर आपने लगाया है तो मोस्ट लाइकली सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा ना वो, and this is a more sophisticated one. So these are different types. As an electrical engineer, you're not interested in all these different types. You just need to remember the type of energy balance. So if you look at this equation, इसमें क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज इग्नोर किया हुआ है, मतलब इक्वल टू जीरो कौन सा हुआ है, इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है चेंज, दैट्स नेग्लिजिबल, ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट्स नॉट बेस्ड ऑन चेंज ऑफ एलिवेशन, वो भी नहीं है इसमें। So but still work transfer this work transfer is also negligible. No, sorry सर sorry sorry, मैंने उल्टा बता दिया, दिस वर्क ट्रांसफर तो इसलिए चाहिए कि इसके बगैर तो आप काम नहीं कर सकते, यू डू नीड वर्क इन, yeah. So this is what is negligible is this thing, the heat transfer with the surrounding. अगर आपने इसको इंसुलेट किया हुआ है, प्रॉपर इंसुलेशन आपने की हुई है, so that can be ignored, and then the rest is a simple equation, W dot equals m dot h1 minus h2। अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन को देखें ये बिल्कुल उसी तरह है जो टरबाइन का था, if you recall, टरबाइन में भी हमने q डॉट को जीरो इग्नोर किया हुआ था सर उस, यस, सर आपकी बताएं, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, मेरी बाकी लोग आवाज, ठीक है। अच्छा ये बाकी लोग कमेंट करें इस पे, हो सकता है आपको कोई मसला हो ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा। बाकियों को आवाज आ रही है मेरी, बताएं। ये बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? सर अभी काफी देर से आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, आवाज देर से आ रही है, मैं एक मिनट, मैं इस तरह करता सर हूँ ना, मैं ये लैन पे शिफ्ट हो जाता हूँ, ठीक है, चेंज टू लैन। Recording, and let's get back.
अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि इसमें इसमें कौन सी बात आपने नहीं सुनी थी, जाके मैं वो रिपीट करूं? नहीं, हम्म। स्क्रीन वो शेयर कर दी है। स्क्रीन शेयर होगी? स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक? खराब हुई है। अब हुई है ना? होगी सर, अब होगी। हाँ, वो टाइम लगता है ना। अच्छा, इसमें मुझे बताएं स्क्रीन इस पे इसमें कौन सी चीज आपको बिल्कुल नहीं सुनाई दी, ताकि मैं वो रिपीट कर दूं इसको। तो वो हम लोग ये बता तो वाले, नहीं सकते अपने आप को। ये डिफरेंट टाइप्स आपको समझ आ गए थे जो? सर पिछले 10 मिनट से नहीं आपकी आवाज आ रही। अच्छा, ठीक है, ये वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप जब देखेंगे तो बस वी नीड टू गेट टू दिस 4.8.1, ठीक है। इससे पहले मैंने ये बताया था कि जो कंप्रेसर्स एंड पंप्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, रेसिप्रोकेटरी, टू फ्रो, या यस और सर। ये रोटेशन वाली है, इसमें यू नीड टू रोटेट समथिंग। तो ये यू हैव these rotors inside the compressor or a pump, and then the fluid is going in one dimension, and the power exchange from the surrounding with the fluid is done through these rotors. और ये सही सेंट्रीफ्यूगल है सही। पंप्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आपने घर में नॉर्मली ये चीज देखी होगी कि जो एयर है, सॉरी, एयर और लिक्विड जो है उसको आप रोटेट करते हैं, ठीक है ना। तो this one I can skip this one because this is too advanced for you. So for our purpose, we only need to look at the energy balance. Yeah? So if I start from the first law of thermodynamics for control volumes, so isme you can see that kinetic energy is ignored. Change in kinetic energy, change in potential energy is ignored. Yeah. So अब उसके बाद क्या बचता है? Okay, and if you remember, change in specific energy is also ignored. Yeah, because you don't rely on temperature. You're not changing the temperature of the substance. So all those changes are ignored. And what is left is only heat transfer, and work transfer, and change in enthalpy. Change in pressure will come through change in enthalpy. When you change the enthalpy, you will change the pressure. So if you insulate properly, if you have proper insulation, that would mean that you can even ignore this term, heat transfer. So then you are left with only these terms, and if you rearrange them, you get this equation. And if you look at this equation, it is exactly in the same form as we had for turbine. तो फर्क क्या हुआ इसमें और इसमें? If I go back to turbine, we got the exact same equation there after those simplifications. ये देखो ना, ये do you see that? So इस equation में और इस equation में तो कोई फर्क नहीं है। तो फिर ये क्या, what do mathematically they have the same form, लेकिन actually क्या फर्क है वो बताएं जरा। वहां पे W dot क्या था? Was it positive or और negative? आउटपुट Was it positive or negative? पॉजिटिव। It was पॉजिटिव। positive because it was producing power, yeah? यस सर। And that had consequences on H1 and H2. That means that H1 must be equal to H2 for a turbine, yeah? Because only then W dot यस can be positive. So actually the steam was losing energy. But in this case, it's the opposite. In this case, because you are working on the system, so this W dot is negative. Huh? This W dot is negative.
If this W dot is negative, this means that H1 must be less than H2. So H2 is greater, or H2, that's why we say that T2 is greater. T2 पे इसलिए इंक्रीज कर रहा है कि एंथैल्पी इंक्रीज हुई है. यहाँ पे लिखा भी है मेरे ख्याल में नेगेटिव. ओके, ये एक एप्लीकेशन है कैलकुलेटिंग कंप्रेसर पावर. अच्छा, अब आपने ये कंप्रेसर वर्ड है, आपने कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में सुना है, ये बताएं मुझे. घर में आपके कहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है, याद है आपको? एसी में लगा होता है, एसी में और किस चीज में, फ्रिज में भी लगा होता है ना. और फ्रिज में भी. यस. तो अब आप मुझे बताओ क्यों लगा होता है वो, अगर आपको कंप्रेसर की समझ आई है तो. Both air conditioning and refrigeration involves a substance, a refrigerant, which needs to go in a cycle. Yeah, it is a cycle basically. So जिस cycle में ये cooling कर देता है आप, when it is done with cooling, yeah, so ये फिर वहां से वापस आएगा और it has to exchange energy with the surrounding and then it has to come back. तो ये जो motion है cycle में, इसके लिए आपको क्या चाहिए? अगर ये एयर कंडीशनिंग और उसमें लिक्विड यूज होता ना, अगर क्या होता, लिक्विड यूज होता, तो आप इसको क्या कहते फिर? पंप कहते हैं. या अब आप उसको कंप्रेसर इसलिए कह रहे हैं कि जो रेफ्रिजरेंट आप यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनिंग में, वो गैस है बेसिकली. दैट्स द ओनली रीजन वी कॉल इट. ओके. अच्छा, और वहां पे why do you need to so the flow normally, आप एक चीज बड़ा जरूरी है इसको समझना कि normally when you want to move a solid body, yeah, whether it's has wheels or even a block, what you need to move it as a whole. So what do you apply? You apply force. Yeah, you don't need to change pressure because rigid body must be moved as a whole. That doesn't involve pressure. Pressure में तो आप उसको तोड़ देंगे ना. So जो gas है, gas is, if you want a gas to move from this point to this point, you know gases move as a result of pressure, and liquid as well. अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा, can you give me one example? gas में शायद आपके लिए example मुश्किल है. Can you give me an example where a body of liquid, yeah, let's say I have a body of liquid, this is a body of liquid which is moved without involving pressure of the liquid. Can you give me an example? Just like solid, इस तरह solid को आप move करने के लिए आपको force चाहिए, इसी तरह liquid को move करने के लिए आपको force चाहिए. You don't need to change the pressure. Can you give me one example? क्योंकि there you will need to change the kinetic energy. Kinetic energy word हम कब use करते हैं? When we talk about something as a whole, yeah, as a whole. तो कोई example ज़हन में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा. एक जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो होते हैं जिसमें आप नहीं, वो प्रेशर होता है ना, वो तो प्रेशर की सबसे बिग स्ट्रीम. ये मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पे? स्पिटिंग में आप क्या करते हैं? ठीक है, सही है.
Spitting में you move that body of saliva as if it is a solid. आप उसका प्रेशर चेंज नहीं करते, आप उसको बिल्कुल ना सॉलिड की तरफ करते हैं, तो वहां पे चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है. सो अब आपको समझ आ गई कि स्पिटिंग से आपको आइडिया हो गया कि लिक्विड्स को मूव करना इतना आसान नहीं होता. तो वहां पे वो जो सॉलिड और काइनेटिक एनर्जी वाली चीज खत्म करके you design systems, you design pipes which work based on pressure, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो pressure है वो काफी होता है उसको मूव करने के लिए. So all you need to do is to change the pressure. So whenever you want to move liquid or gas, you need to change the pressure. ठीक है ना? That's why ये kinetic energy का जो फैक्टर है वो negligible होता है. समझ आ गई बात? मैं इस एक और देसी एग्जांपल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन आपने नहीं बताया. बारिश में क्या होता है? बारिश रेन कम्स एज अ होल, या तो रेन ऊपर से नीचे इसलिए नहीं आता कि उसका ऊपर प्रेशर ज्यादा और नीचे प्रेशर. It just comes down like as if it were solid. समझ आ गई ये बात? जी सर. ठीक है. So let's get to this example where you calculate the compressor power. और ये देखिए कि अच्छा डायग्राम नोट करें, ये सिंबल आप यूज करते हैं कंप्रेसर के लिए, और टरबाइन के लिए सिंबल कौन सा था? ऐसे. ये उल्टा था. Do you think? Do you understand why is this so? It's like a schematic. Because when you compress something, yeah, when you compress something, the pressure increases. So this just reminds you that it's a compressor. और वहाँ टरबाइन में क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर इस साइड पे चूंकि हाई होता है, इस साइड पे कम होता है, तो दिस इंक्रीज ऑफ एरिया रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में प्रेशर if it's a steam turbine. तो बाकी ये इसमें जो इस एग्जांपल में जो चीज मैंने आपको बतानी है, बाकी तो आपको पता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपने यहाँ नोट करनी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉइंग आइडियल गैस मॉडल, which means that you will have to use that equation PV is equal to RT, basically MRT, and that is used here. You use the definition of m dot, actually not the definition, the relationship between velocity and m dot facilitated by specific volume, and this specific volume then comes from the pressure. आपको यहाँ पे इसने pressure दिया हुआ है, specific volume नहीं दिया हुआ, so you have to use this equation. That's the crux of this example. उसके बाद simple mathematics और वो first law of thermodynamics है. So ये एक चीज समझने से, ये अगर आप ये नहीं पढ़ते इस क्वेश्चन में, तो you will not recall this and you will never be able to go after this point. ठीक है? This is an example of a pump system, which means that now you can expect water. So you have water at this point, given temperature, given pressure, diameter of this inlet, और ये इसका वॉल्यूम फ्लो रेट है, एरिया टाइम्स वेलोसिटी. ठीक है, ये भी वॉल्यूम नहीं है, एरिया वेलोसिटी है. And then you have this pump here, and this is a change of level. And at this point, there is, after this piping, there is an extra hose with a nozzle at the end. Here you have a nozzle.
नोजल में होता है कि जो डायमीटर है वो चेंज हुआ है ना, ये डायमीटर 5 इंच का है, यहाँ पे ये डायमीटर 2 इंच का है यहाँ तक, और इसके बाद ये यहाँ पे 1 इंच का है. So you know that when the diameter is decreased and then you have a nozzle. So आपको याद होगा कि नोजल में क्या होता था. रिमेंबर ये पंप वाला एलिमेंट यहाँ से हो गया. ये इस पंप ने क्या करना है, इस पंप ने प्रेशर को चेंज करना है from this small value. The value of pressure is 14.7 pound per square inch. So this pump has to change that pressure to a larger value. Now in this part of the nozzle, the inlet pressure is very high, the outlet will be smaller. So जब pressure कम होता है तो क्या चीज increase हो जाएगी nozzle में, आपको याद होना चाहिए, velocity. So जो V2 है यहाँ पे, that V2 must be larger than V1. अब आपको समझ आई है कि इसने यहाँ पे nozzle क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि ये पंप का पानी यहाँ पे स्प्रे करना चाहता है, ये पानी इसको, अब यहाँ पे पाइपिंग खत्म हो गई. Now this body of water has to travel in the air and it has to cover a longer distance. So इस time पे this is behaving like a क्या, ये मैंने पहले एग्जांपल दी थी spitting वाली. So there you need to rely on kinetic energy. You need to have a higher velocity क्योंकि वहाँ पे you cannot rely on pressure. Pressure पे आप तब rely करते हैं जब आपके पास पाइप हो, and air is not a pipe. ये बात समझ आ गई. So pump can change the pressure in this piping, but if you need to increase the velocity because you want to move that body of water through the air, then you need to have a nozzle. अच्छा, एक चीज और आप नोट कर लें इस एग्जांपल में, वो ये है कि बाकी ये जो 5% है ना, the magnitude of rate of heat transfer from the pump to the surrounding, इसका मतलब ये है कि ये insulated नहीं है, it's not well insulated. So वो जो heat transfer है QCV dot, that is 5%. अब 5% रेशो में क्या होता है, 0.05 times what, the power input. Power input क्या होता है, W dot. That's the crux of this example. You just need to translate that 5% into this equation, or when you write that energy balance में Q dot जहाँ पे भी आएगा आप उसको, you will replace that by 0.05 times W dot, और उसके बाद ये standard question है. So मैं आपको सिर्फ वो चीज बताता हूँ जो आपके लिए नहीं होती है, and the rest is algebra basically. ठीक है ना. You use the definition of, sorry, not the definition, relationship between mass transfer and velocity dictated by area and volume, and because mass is not leaked, so m1 dot equals m2 dot, which means the same equation can be used for v1 as well as v2. They are probably the unknowns in one part. In the other part you just use the energy balance. Energy balance में देखो ना, ये W dot given है, ये given है क्वेश्चन में, और Q dot के लिए आप क्या करेंगे, you will replace Q dot with 0.05 W dot, that will be added with this. I think you need to have a minus sign as well. ये मैंने इक्वेशन लिखा है ना, इसमें माइनस साइन भी है क्योंकि ये हीट लॉस है. तो minus 0.05 minus 1 will be minus 1.05. If I read that correct. So अच्छा, ये टॉपिक, दिस इज जस्ट द एप्लीकेशन, ये तो अभी एग्जांपल्स थी. आपको मैंने एक बात बताई थी, इफ यू कैन रिकॉल,
कि जो एसी पावर है, एसी पावर सिस्टम या मैं जो एनर्जी है बेसिकली, उसमें जो एनर्जी स्टोरेज है, वो मैंने बताया था कि वो किन दो फॉर्म्स में मैंने आपको अभी तक हमने समझा है। दो फॉर्म्स हमने पढ़े हैं अभी तक, जिसमें आप एसी जनरेशन अगर हो रही है तो यू कैन सेव एनर्जी, AC energy, in one of those two forms. Can somebody recall that? One was flywheels, yeah? और दूसरा क्या Yes. था? दूसरा क्या था? बस हमें हमें दूसरा हमें याद नहीं आ रहा। मैं वो जो दूसरा एग्जांपल था, Flywheel. वो जो मोल्टन सॉल्ट वाला था ना, मोल्टन सॉल्ट आपको याद है? फेस चेंज मटेरियल्स आपको याद हो? फेस चेंज Yes. मटेरियल्स, phase change materials was probably for DC, because you don't want AC में क्या होगा, you will keep changing the phase and that's you're not actually storing anything, you know. तो वो flywheel ही है. So let's stick to DC. अगर ये DC energy है तो DC में molten salt या any phase change material. Now this is another form of saving, um, another mechanism of saving energy. Compressed air or pumped storage. So what you can do, um, I think you can, yes, let me just, you can, um, you know why that even for AC it should be true, yeah? Forget about, so let's get back to that molten salt and phase change material. Can you now convince yourself that even AC power can be saved there? Hmm? Let me just write this down. Even AC power can be saved there. So what will you do with this oscillation? ऑसिलेशन का क्या होता है? मुझे अब याद आ गया, वो शुरू में मुझे लगता है कि मैं शायद मिस चीज कर रहा हूँ. सो if voltage changes sign, yeah, it is positive and it becomes negative, yeah, and the current also changes sign from positive to negative. What is V times I? Will this change the sign? It will remain positive. Yes, sir. So which means that the if you are um, changing the phase of some material like salt, the power will always be from the surrounding to that phase change material. Yeah? So there will be no oscillation. ये चीज यहाँ पे भी हो रही है, हो सकती है. अब pumped hydro में आप imagine करें आप क्या कर सकते हैं. You know you have off peak hours, yeah? You have off peak hours Yeah. and you Yes, have yes. peak hours. So off peak hours में आप क्या कर सकते हैं कि when you don't need that power, you can use that electrical energy W dot to pump. So you connect it with a pump, and that pump can lift some body of water up in a tank. Yeah? And that, so you have a small mini dam, let's say, inside your building. And when you have peak hours, what you can do in peak hours, that energy can be utilized again. आ रही है आपको आवाज? अभी मेरे हमें डिस्कनेक्ट हो गया था.
हेलो, आवाज आ रही है अभी? यस सर। अच्छा, ये जी अब मेरे आ ख्याल रही में यूनिवर्सिटी का जो वाईफाई है ये भी मसला करता है ना, है। लेकिन जी सर। एनीवे आई नीड टू शेयर अगेन। शेयर। अच्छा ठीक है। सो अच्छा, ये बात आपको समझ आ गई, ये वाली ये पंप, हाउ यू कैन यूज पंप? सर ये जो पंप्स होंगे ये कि सेपरेटली कहीं स्टोर नहीं, आप स्टोर आप करेंगे इस आप वाटर इमेजिन करें, आपके पास जो है ना ऑफ पीक आवर है, और पावर आपको आ रही है, को। ठीक है जी। ना? आप उस एनर्जी को मतलब नॉर्मली आप यूपीएस यूज करते हैं ना, जी सर। तो यूपीएस की जगह आप इसी पावर को एक पंप को दे दें, और वो पंप क्या करेगा, वो किसी पानी पानी को ऊपर जो है टैंक में कर देगा, ऊपर पहुंचा देगा। तो यू हैव अ चेंज ऑफ जी प्रेशर, या यू हैव इंक्रीज द प्रेशर, एंड सर देन वो तो क्या, then you will need a turbine basically. सर वो तो टेम्परेचर। क्या? अच्छा। if you want to सर टरबाइन। you want to पंप ने तो वो करना है ना, पंप रिवर्सिबल तो नहीं होता ना, so now you need to, नो। yeah, now you need to use that energy in peak hours, ठीक है? पीक आवर्स में आपको एनर्जी चाहिए, वो स्टोर एनर्जी, तो आपको उसी बिल्डिंग में टरबाइन लगाना पड़ेगा। ये घर में नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपेंसिव सेटअप है, इंडस्ट्री में हो सकता है, और ये इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्री में वो कर रहे होते हैं। दैट्स द ओनली वे दे कैन बैलेंस। अच्छा, और ये पता है वो क्यों करते हैं? आप ये यू कैन आस्क क्वेश्चन कि यार उन्होंने तो पावर कंपनी से ही लेनी है ना पावर, यस सर। तो व्हाई शुड यू बॉदर डूइंग दिस इन योर इनसाइड योर प्रेमिस? तो इसका क्या जवाब है बताएं? इसका ताल्लुक किससे है पता है आपको? ये मैंने एक वर्ड लिखा है, आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा, सर टैरिफ। क्या लिखा है आपने? टैरिफ, टैरिफ। सर, अच्छा अच्छा। क्योंकि क्योंकि बिजली किस टाइम महंगी होती है? इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, इंडस्ट्री में पीक आवर में बिजली महंगी होती है। यस सर। तो अगर आप वो अपना स्टोर्ड एनर्जी यूज करेंगे, सो यू विल बी एक्चुअली सेविंग मनी एज वेल। यस सर ठीक है सर, समझ आ रही ठीक है ना? दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और इफ यू नाउ वांट ए कंप्रेसर, तो कंप्रेसर में क्या पड़ेगा? यू नीड टू कंप्रेस एयर. So this diagram will explain. Let's say off-peak electricity hai, and you use a compressor. Yeah. So the compressor takes atmospheric air at atmospheric pressure, and it increases the pressure, and it stores that air inside a casing. ठीक है ना? ये मेरे ख्याल में है। बिल्कुल यस सर। जिस तरह माइंस होते हैं ना, तो माइंस की जी तरह सर। एक चीज होती है। and in off peak hour this air, now जिस तरह वहां पे टरबाइन चाहिए था ना, हमें पास पंप के साथ टरबाइन भी चाहिए था, जी। तो अब हमारे पास कंप्रेसर के साथ साथ हमें क्या चाहिए? कंबशन इंजन भी चाहिए। So which means that we can now use this pump, this compressed air, जिस तरह आपने देखोगे सीएनजी में क्या होता है, सीएनजी में वो कंप्रेस्ड होता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल यस गैस। सर। सो उसको आप थोड़े सी भी फ्यूल के साथ, यू विल डू नीड फ्यूल, उस थोड़े से फ्यूल के साथ भी आप उसको दोबारा बर्न करके, you again need a turbine, and you can generate electricity in peak hours. And of course again this is only feasible economically for large industries. कराची में ये लोग कर रहे होंगे definitely. यस। So the next topic is heat exchangers. Heat exchangers आपने पाकिस्तान में तो कम है, लेकिन ये वेस्ट में बहुत ज्यादा, वेस्ट में जितनी भी कूलिंग है ना, घरों में कूलिंग और हीटिंग दोनों, वो हीट एक्सचेंजर बेस्ड होती है। दे यूज वाटर बेस्ड हीटर्स, वाटर बेस्ड हीटर्स। तो वो तो क्या जो पूरे करते हैं? घरों में हाँ, पाइप्स लगवाए थे, जो सॉरी, पूरे घरों में पाइप्स लगवाए। वो हाँ, वो असल में वो इस तरह पैसे बचाते हैं ना, कि स्पेशली ये मैं उन एरियाज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पूरी बड़ी बिल्डिंग है और उसमें फ्लैट्स है ना,
जी तो अब अगर हर घर के अंदर जो है ना वो लोकल जनरेशन हो रही हो तो वो तो बहुत ज्यादा। अब आपको पता है, आपने कभी ये नोट किया है कि आप जब गाड़ी, मैं से हट के एग्जांपल देता हूँ, जो ज्यादा एनर्जी है वो ऑन ऑफ में यूज होती है, पता है आपको? ऑन ऑफ में आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते हैं बार बार, सो यू विल बी कंज्यूमिंग मोर एनर्जी। गाड़ी को भी आप ऑन जो है ना स्टार्ट स्टॉप करते हैं, आप जब एक वेलोसिटी पे जाते हैं तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम होती है, वो स्टेडी स्टेट होता है। ट्रांजिएंट्स में एनर्जी ज्यादा जी यूज होती है। सो अब आप यस अगर अगर हर घर इंडिविजुअली ऑन ऑफ करता रहे तो दैट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो अगर आपने सेंट्रल, आपने नाम सुना होगा सेंट्रल हीटिंग। जी सर। तो सेंट्रल हीटिंग में ये होता है कि आप एक बड़ा, आपके पास जो है ना बेसमेंट में आप हीटिंग करते हैं, गैस हीटिंग या कोल या वो वटेवर, कोल बेसिकली कोल बेस्ड हीटिंग होती है मोस्टली, एंड यू प्रोड्यूस हॉट वाटर। ठीक है, अब हॉट वाटर की जी क्वालिटी ये है कि आपको पता है उसकी स्पेसिफिक हैविटी, स्पेसिफिक जो हीट है ना सी पी और सी वी, दैट इज लार्ज फॉर वाटर, आपने खुद भी बताया था ये। So which means that once it gets hot, then it will resist any changes in temperature. So it contains that energy, or if you can use that in, if you circulate that throughout the building, तो अब आपके पास उसके बाद सिर्फ कंट्रोल का प्रॉब्लम रह जाता है कि यू जस्ट नीड, इंस्टेड ऑफ ऑन ऑफ, यू जस्ट रेगुलेट द फ्लो। आप फ्लो को कम ज्यादा करें, ऑन ऑफ ना करें उसको, so that you can save a lot of energy in this way. And same goes for cooling. कूलिंग में ये है कि अगर आपने उसका टेम्परेचर कम किया हुआ है, so all these things work on the principle of heat exchangers. So this is a very crude example, this one. इसमें क्या है, इसमें कोई rocket science नहीं है, you just have two inlets, yeah, and one outlet. Now two inlets का मतलब ये है कि इनमें हो सकता है एक inlet पे टेम्परेचर ज्यादा हो और दूसरे इनलेट पे टेम्परेचर कम हो। When you allow them to mix, so you can achieve some desired temperature. So basically one of these liquids can be cooled or heated depending on the temperature of the other. Yeah? But this is very basic. जो ज्यादा कॉमन है ये टाइप 1 है, इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। दूसरा है tube within tube. So you have one tube, and within that tube you have another tube. Now, here the liquids or gases, they were allowed to mix physically in direct contact. Here they can only exchange energy through conduction, क्योंकि वो नहीं है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना। जी सर। So अब उसमें ये हो सकता है कि आप you can imagine कि one stream comes from this, yeah, and one streams come from this. One of them will be coolant or the opposite of coolant. So you can change the temperature of one substance by making it exchange thermal energy with another uh, substance. ठीक है, और अब बी और सी में क्या फर्क है, जरा देख के बताएं मुझे। उसमें भी पाइप विद इन अ पाइप और उसमें भी पाइप विद इन अ पाइप। कोई बता सकता है सर क्विकली? इसमें एरोस की डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट ये होगी। यहाँ पे ये अगेंस्ट फ्लो अगेंस्ट है और ये फ्लो सेम डायरेक्शन है, so this will have different application, parallel flow or anti parallel flow। और ये बहुत इफेक्टिव है ये वाला। ये टिपिकली जो गाड़ियों में यूज होता है ना, ऑटोमोटिव इंजन में, वो ये होता है कि या रेडिएटर जो होता रेडिएटर, इसमें इस इन दोनों में तो या पैरेलल है या एंटी पैरेलल है ना, तो एंगल या 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा ना। इसमें 90 डिग्री है। यस होता है, इसमें 90 डिग्री होता है। one substance is moving this way and the other substance is moving this way। इससे क्या फायदा होगा, इमेजिन करें।
इससे मैक्सिमम आप कंडक्शन। नहीं, इससे आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं ना बाय मेकिंग स्टेजेस. सो यू हैव वन स्टेज एंड देन यू हैव अनदर एंड देन यू हैव अनदर, आप उनको सीरीज में लगा सकते हैं. ये काम यहाँ पे नहीं पॉसिबल. यहाँ पे भी पॉसिबल है. यस। यहाँ पे भी पॉसिबल है आपको, अगर यहाँ पे आपको वो काम करने के लिए वो ट्यूबिंग लगानी पड़ेगी ऐसे ऐसे. जी। so but that, remember that requires large space. तो ये ज्यादा इफेक्टिव है. इसमें एक और भी वजह है कि यहाँ पे आप सिर्फ मेनली कंडक्शन ही कर सकते हैं. इसमें आप बताएं इसमें क्या होता है. इसमें कौन सा मोड होगा. कन्वेक्शन। कन्वेक्शन और रेडिएशन अलग से भी हो कंडक्शन। सकती है. So because many यस। modes are possible, so this is more effective. और बायो कनेक्शन का इसका ये है, just to make sure that you have some example. ये आपको क्या नजर आ रहा है. Guess. ये पेशेंट के ऊपर इसने आप गेस किया क्या. This is an inflatable thermal blanket. So अगर आपने किसी पेशेंट को बहुत शॉर्ट टाइम में उसका टेम्परेचर चेंज करना हो, देयर आर सम केसेस जिसमें डैमेज को कम करने के लिए यू नीड टू क्विकली चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट अप और डाउन. ठीक है ना. जिस तरह इसने एग्जांपल ये दिया हुआ है, जो कार्डियक कार्डियक अरेस्ट सुना होगा ना. कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि आप का जो ऑक्सीजन जो है ना, जब ब्लॉक हो जाता है, तो some organs literally they fail and they fail irreversibly. उसके बाद वो दोबारा नहीं आते. आप ठीक हो भी जाए तो वो you lose that capacity. So what engineers have actually discovered is that you can reduce that damage if you decrease the temperature, because those organs are functioning very slow at low temperature. So when something is functioning slow, the damage will also be instant. तो ऐसे केसेस में अगर आपने कम टाइम के लिए करना है, तो आप देखिए कि इसमें मैकेनिज्म क्या है. यू हैव a heat pump here, yeah, or a compressor depending on what you are using in this pipe, and then you have this inflatable blanket, and you can uh, this is a heat exchanger now. Heat. So you can make the patient exchange thermal energy with this blanket. और exposed area आपने कितना बढ़ा दिया है, देखो ना. उसकी पूरी बॉडी के साथ आप उसको simultaneously जब आप exchange करेंगे, तो this will be a very fast exchange of thermal energy. समझ आएगी बात. जी सर। अच्छा, ये इसमें जो मॉडलिंग के लिए क्या क्या आप नोट करें. यू जस्ट नीड टू नो which things are negligible. तो अब negligible क्या है. ये जो underline है, typically they are negligible. Why? Because you don't rely on change of elevation, you don't rely on kinetic energy. ठीक है ना. So mainly the mass transfer and enthalpy is required. क्योंकि थर्मल एक्सचेंज है, वहां पे हीट ट्रांसफर होगा तो मास ट्रांसफर, एंथैल्पी चेंज, और ये तो होगा ही होगा, जाहिर बात है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर. हाँ, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं if you have insulation with the surrounding, क्योंकि mainly you would like only these two substances to interact with each other. You don't like interaction with the surrounding. तो अगर आपने उसकी केसिंग को इंसुलेट प्रॉपर्ली किया हुआ है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका ये वाला टर्म जो है ना, ये जो Q डॉट है आपका, this will also be 0. Now why is this W dot 0? क्योंकि W डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. वर्क कर रहे हैं।
लेकिन कौन सा वर्क आपको पता है? हमने जो ओरिजिनल डब्ल्यू डॉट है ना, उसको हमने स्प्लिट किया था। एक था फ्लो वर्क जिसमें प्रेशर इन्वॉल्व है, एंड दैट बिकेम पार्ट ऑफ एच एंथैल्पी। तो यहाँ पे वो वर्क है जिसमें फ्लो इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क है, मैग्नेटिक वर्क है, पोलराइजेशन वर्क है, वो सारी चीजें, या शाफ्ट वर्क है, रोटेशन, पंप, कोई मोटर वगैरह, तो वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। हीट एक्सचेंजर में नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग, so this is also zero. Yes. So you are left with a very simple equation that m dot h, yeah, at all inlets will be equal to m dot h at all exits. Yeah? So it's just a balance of enthalpy. So you just remember it that in the heat exchanger, you can simply call it enthalpy balance. कि बाकी सारी चीजें जो है ना वो चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अब यहाँ पे एक और वर्ड यहाँ पे नाम आपने सुना होगा, कंडेंसर। So two applications, one is computer cooling and one is condenser. So first let's deal with condenser. Condenser से आपके ख्याल में क्या मतलब होगा? You must have heard this name before. जहाँ पे कंडेंसेशन होती है ना। So when heat exchanger में अगर मैं इधर आता हूँ, let's say ये heat exchanger है, ये वाला। So let's say ये वाला जो liquid है, this is the target substance जिसका आपने चेंज किया, और ये वाला है, ये क्या है? ये लेट्स से कूलेंट है। क्या है? कूलेंट है। तो नहीं, या ये भी हो सकता है कि ये जो है ना, ये हीटिंग के लिए हो, सॉरी, or your target हो. So when let's say this temperature is high and this temperature is low. So the temperature goes from high to low only because this hot substance is losing thermal energy to this target substance. ठीक है? तो ये n मुमकिन है कि exit पे ये जो है ना, it will have lost that temperature, so it can condensate. हो सकता है वेपर्स जो है ना स्टीम से वो कंडेंस जो है ना वो में आ जाए, वो कंडेंसेशन हो जाए। सो मे बी इट गोज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, सो इन दैट केस यू विल कॉल इट अ कंडेंस। सो अब आप मेरे ख्याल में ये आप इस क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। वी कैन ओनली फोकस ऑन दिस डायग्राम and on this diagram from part A. अच्छा, यहाँ पे आपने नोट किया है कि हम क्या कर रहे हैं? We want to produce steam for a power plant. No, we want to condense steam, sorry. So let's say this is the target. Target is this steam. Yeah? So this steam has to enter this thing which we call condenser. And what you need to do is that you need to make sure that as this steam leaves at the exit, the temperature is reduced. ठीक है? Here the temperature is, और यहाँ पे इसको आपने steam लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है? Condensate. वो इतना कंडेंस हुआ है कि उसका टेम्परेचर है ना
टेम्परेचर इतना कम हुआ है कि वो कंडेंस हो गया, बिकम्स अ लिक्विड फ्रॉम स्टीम। और आपने नोट भी किया है कि यहाँ पे हाउ डू यू नो, प्रेशर दोनों का सेम है, यहाँ पे क्वालिटी इसने क्या लिखी हुई है 0.95। इसका मतलब ये है कि इट्स अ हाई क्वालिटी mixture in which you have 95% vapor and only 5% is liquid। लेकिन यहाँ पे जब ये कंडेंस होता है most of it will be liquid। अब ये कैसे पॉसिबल है? इट्स बिकॉज ऑफ वाटर। अब देखना उसका टेम्परेचर कम हुआ है, हाई से कम हुआ है, लेकिन कूलिंग का क्या हो गया, ये 20 सेल्सियस से 35 हो गया, क्योंकि दिस इज गेनिंग थर्मल एनर्जी and that is losing thermal energy because of this heat exchange। ये बात समझ आ गई? Now Yes. that whole story is represented here so easily। ये जो वन है ना, you can think of it as state one। तो state one में आपके पास क्या है, that 95% quality। So you start from there, yeah, with a high temperature and a high quality, and basically you are cooling। When you are cooling, what will happen? The specific volume will decrease. Till this point, the temperature will not change because it is a change of phase, but after that, you will have condensation। Once it becomes liquid, उसके बाद क्या है, सब कूलिंग। आपको याद है इसमें हमने एक वर्ड यूज किया था, सब कूलिंग। तो सब कूलिंग में वो कंडेंसेशन हो रही है। स्टेट 2 में देखिए कि उसका टेम्परेचर भी कम है और बेसिकली इट बिकम्स लिक्विड, सो यू डोंट हैव दैट क्वालिटी एनीथिंग। अब इसका इन दोनों का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि व्हेन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपको ये पता होगा कि स्टेट 1 के लिए आप कौन सा टेबल यूज करेंगे, यू विल यूज द टेबल ऑफ सैचुरेटेड मिक्सचर। और स्टेट 2 के लिए कौन सा यूज करेंगे, यू मस्ट रिमेंबर दैट। अब पता है कि स्टेट 2 में ये कंडेंस या कंप्रेस्ड लिक्विड है ना। अच्छा, यहाँ पे इसलिए भी है कि कंडेंस वर्ड यूज होता है, वहां पे उस चैप्टर में, चैप्टर 3 में इसके लिए क्या क्या यूज होता था, कंप्रेस्ड लिक्विड। कंप्रेस्ड लिक्विड, आपको याद होगा कि कंप्रेस्ड लिक्विड के लिए टेबल नहीं था, डू यू रिमेंबर दैट? वो एक असाइनमेंट में भी आपको याद होगा ना। सो उसके लिए हम नियरेस्ट जो आपका सेचुरेशन पॉइंट है ना, सेचुरेटेड लिक्विड, हम वो वाला टेबल यूज करते हैं। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस एग्जांपल, और वो यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए ये एट स्टेट्स 2 and 3, 2 और 3 दोनों पे ये है। यहाँ पे भी लिक्विड है क्योंकि कूलिंग वाटर इज अ लिक्विड, और स्टेट 2 में ये जो स्टीम है ये कंडेंस हो चुका है। तो इन दोनों में आप वो वाला, ये वाला टेबल यूज करेंगे, सैचुरेशन वाला। और कंप्यूटर कंपोनेंट्स की जो कूलिंग है, ये देखें इधर। Now this example is actually very instructive for you। So this looks like a computer system, either a desktop computer or any other computer। ये में मदरबोर्ड के ऊपर वो जो लगे हुए हैं डिफरेंट ना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सो अब आपको इस डायग्राम से देख के मुझे बताइए कि रिक्वायरमेंट्स क्या है इधर। What are the requirements on this cooling system? Can someone tell me if you can understand this diagram? Definitely you need a fan. That fan will draw air from the surrounding, and then the air has to leave through this exit, and here in this region the air will have to exchange thermal energy with the electronic components। So basically the air will function as a coolant, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो हाई टेम्परेचर पे होंगे, एयर लो टेम्परेचर पे होगा। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट, दो रिक्वायरमेंट्स इस दी हुई हैं। रिमेंबर ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये तो गिवन है ना। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 टेम्परेचर है। ये जो लास्ट चीज है ये रिक्वायरमेंट है।
Why is this a requirement? Can you imagine why this will be a requirement? Velocity. So why would you like velocity to be smaller than some value? So you do not want velocity to increase this value. अगर ये increase करता है तो क्या होगा? आप imagine करें. High velocity air का क्या मतलब होता है? कि यहाँ पे कंप्यूटर जब कूलिंग करता है फैन से तो बाहर आपको क्या कौन सी चीज एनॉय करती है आपको? What is the annoying phenomena there? Hmm? याद है याद आ रहा है आपको? अच्छा साउंड फिर नहीं आ रहा? यही पुराना है. अच्छा फैन साउंड ठीक है. तो वो जो नॉइज है उस नॉइज को आप कंट्रोल करते हैं बाय प्लेसिंग अ लिमिट ऑन द वेलोसिटी कि आप बहुत ज्यादा हाई फैन को इतना तेज ना घुमाओ कि वो जो है ना वो अनोइंग हो जाए. अच्छा और यहाँ पे व्हाई डू यू थिंक वी हैव दिस कंस्ट्रेंट? क्योंकि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उस पर भी लिमिट होना चाहिए ना. ठीक है ना. दिस कूलिंग शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हीटिंग आउटसाइड. So you basically in this example you are supposed to impose these two inequalities. या अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन या किसी भी engineering problem solving में when you impose these constraints like that on equations आपको given है first law energy balance assumptions सारी चीजें mass flow rate connection with velocity and so on. So when you have all these mathematical equations and you impose these two inequalities, that gives you, of course, before that imposition, you have to bring all those equations into a form which is relevant to the question. इस question में जो main challenge है वो area का है कि इस fan का इस inlet का जो है ना area कितना होना चाहिए. That area is the unknown. So first you write an expression for that area, all the variables are involved, and then you impose these constraints. This constraint, velocity constraint, and the temperature at the outlet constraint. अच्छा अब देखें velocity यहाँ पे कहाँ पे आ रही है इस equation में, denominator में. So denominator में velocity अगर आ रही है, so if you increase velocity, the area will decrease. But if you decrease velocity from 1.3, the area will increase. So if you need a smaller velocity, you will need a larger area. And same goes for temperature. That T2 is also in the denominator, which means that if you want T2 to be smaller than that value, area has to be larger than some value. So which means that whenever you impose this constraint in this equation, you have to change the equality to greater than or equal to. Remember, वहां पे लेस देन था और ये ग्रेटर देन है क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर में है. You know when you change the denominator, when you decrease the denominator, the overall result will will increase. तो अगर डिनोमिनेटर में कोई लेस देन इक्वलिटी का कांस्टेंट है तो वो इस क्वांटिटी के लिए ग्रेटर देन इक्वल होगा. दैट्स कॉमन. And the rest is so it actually turns out that if you want to reduce noise and if you want to make sure that the outside temperature is not too large, then you need an inlet area of the fan is, I mean that there is 52 centimeter squared is the minimum area. आप उससे कम नहीं कर सकते. ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक हमने कर लिया. बाकी नेक्स्ट टाइम एक छोटा सा टॉपिक रहता है
नेक्स्ट टाइम हम जो है ना मोस्ट लाइकली नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर जाएंगे, क्योंकि दिस थ्रॉटलिंग डिवाइस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। कोई क्वेश्चन है तो आप सर पूछिए। मिड का रिजल्ट बता देंगे सर? सॉरी, क्या? मिड का सिलेबस सर? मिड का सिलेबस तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था ना, कि जो हमने सेशनल 1 में कवर नहीं हुआ था। सेशनल 1 से आपको पता है, सेशनल 1 से पहले कुछ टॉपिक हमने किए थे लास्ट 2 लेक्चर्स में, वो एग्जाम में नहीं आए थे, इफ यू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ सेशनल 2। और अभी सेशनल 2 से पहले जितने भी टॉपिक्स मैं कवर करूंगा वो सारे आएंगे। कब है आप लोगों का पेपर? ठीक है सर। टाइम टेबल अभी आया है या नहीं? सर आ गया सर, वो सेंट्रल एकेडमिक ऑफिस ने डाला था सर। नहीं आई तो थिंक उसमें, ट्यूसडे को है सर। अच्छा ये कमिंग ट्यूसडे को है? यस सर। यस सर। नहीं तो इसका मतलब ये है कि हमारा फ्राइडे को लेक्चर होगा एक ना। यस सर। हाँ, तो फ्राइडे वाला लेक्चर हो सकता है वो मैं उससे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना डालूं, उससे एमसीक्यू टाइप का आ सकता है। अदर देन दैट जो है ना, जो 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 प्रॉब्लम्स है वो आज तक कवर्ड होगा इसमें। ठीक है, लेकिन ठीक है सर। लेकिन सेशनल 1 में जो चीजें मैंने नहीं डाली थी, बिकॉज दे वर टू रिसेंट, तो अब वो सेशनल 2 में आएंगी। ठीक है, सो यू हैव टू गो बैक टू योर नोट्स एंड टेक इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। ठीक है, किसी को याद आ रहा है सेशनल 1 में क्या हमने नहीं किया था? मेरे ख्याल में ये जो प्रॉपर्टीज थी ना, सब्सटेंस प्रॉपर्टीज, ये टेबल से देखना था, इससे हम सिर्फ एमसीक्यूज हमने सेशन 1 में पूछे थे। तो इस दफा वो फुल फ्लेज चैप्टर 3 इज द मेन टॉपिक ऑफ कोर्स। ठीक है, थैंक यू। नाउ क्लोजिंग द सेशन। सो ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।